to share his views on the event. Namaskar. Good morning, Professor Pant. You are a very old friend of mine. I'm so happy to see you here today. Dr. Nautia, मुझे पता चला कि आप अभी यहाँ पे एनरोल किए हैं PhD के लिए IIT रूरकी में, some other institution. So I think you are also coming towards the same field, the field where we all belong to. My junior colleague, Uttam, very dedicated, very hardworking. I have seen you working in a very dedicated way with a clear-cut mission. I really congratulate you for organizing this event. I think this is the cursor to a bigger event which I have discussed with you at the end of this year. And it's a very good beginning. I also accept humbly the honorary advisory offer which your department has requested me to join as an honorary advisor for future initiatives. All my other respected colleagues in the dais, my younger sister from Canada, who is the chairperson and the founding director of MDS India Camp, together with my brother-in-law. I think they are observing from behind and to find out as to where things needs to be pulled up and where things needs to be focused. And when people sit behind, they become very good observers as such. And all my other distinguished faculty members and friends, Vidya ke Kendra pe hoon, and what better than IIT Roorkee? IIT Roorkee, I feel that I always come back home, Professor Pant, whenever I come to IIT Roorkee, because I have come here so many times. And since I'm in the epitome of knowledge, so I start with a stuti of Goddess Adi Shakti. Namo Jayanti Mangalakali Bhadrakali Kapalini Durga Shiva Shamadhatri Sahaswata Namostute Sharva Mangala Mangalle Shive Sharvartha Jadike Sharanye Trayambake Gauri Narayani Namostute Ya Devi Sarvabhuteshu Vidyarupe Namastita Namastashvai 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 Namo Namaha. यहाँ पे सब के सब बुद्धिजीवी लोग हैं, तो माता रानी की एक और श्लोक बोलता हूँ. या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपे नमस्तिता नमस्तश्वै 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 नमो नमः. Just to give a small brief about myself, I'm associated with the ruling party at the center, and I have been advisor to many ministers in the past, and currently also I bet for the party and the government in different news channels on important issues. Uttarakhand is a Dev Bhumi not only in a metaphysical way or in a philosophical way. साक्षात में काम के हिसाब से भी उत्तराखंड देवभूमि है, not else. और जिस हिसाब से आप लोग काम कर रहे हैं और खास करके माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के हिसाब से चार धाम यात्रा का जो प्रोजेक्ट हो रहा है वो तो अपने आप में अतुलनीय है. एंड जब मैं चार धाम प्रोजेक्ट की यात्रा के अलग अलग क्षेत्र देखता हूँ और अलग अलग दिशा देखता हूँ, मुझे लगता है कि जैसे साक्षात कैलाश मानसरोवर से उत्तराखंड में शिव जी के आशीर्वाद से और वरदान से उत्तराखंड में आके विराजमान हो गए हैं माउंट कैलाश. इतनी शानदार वे में डेवलपमेंट हो रहा है वहां पे. एंड आई थिंक institutions like IIT Roorkee symbolizes that disha and that gati
towards this vision of the Honorable Prime Minister. We have thought, and the PM has decided, that India should be the second largest economic power of the whole world by 2047. 2028 tak, the way things are going, we are already a $3 trillion economy now. And in my understanding, by 2028, we should be the third largest economic power of the world. We are currently the fifth largest economic power of the whole world as such. और वो दिन दूर नहीं है. By 2028, 2029, we should be the third largest economic power of the whole world as such. और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि by 2047, we shall be surpassing Japan and United States of America as the second largest economic power of the whole world. And in my understanding, I think by 2060, we should be the number one economic power of the whole world, surpassing United States of America. माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नींव रखी है आप, उसकी जो एक कमल की तरह जो एक विशाल फूल की तरह खिलेगी, वो 2047 के आगे, वो प्रधानमंत्री जी जब सोचते हैं वो आगे की 100 साल लेके सोचते हैं. और अभी तमाम जितने सारे कदम उठाया जा रहे हैं प्रदेश के सरकारों के साथ, भारत सरकार के साथ, और तमाम जितने सारे वेल नोन रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस लाइक IIT, Roorkee and other IITs, मैं मानता हूं कि वो विजन दूर नहीं है. And I think for fulfilling that vision, transportation, communication is one of the backbone as such. क्योंकि transportation, communication के बिना विकास नहीं हो सकता है. विकास अगर नहीं है तो उन्नति नहीं है. उन्नति अगर नहीं है तो उन्नत भारत नहीं है. उन्नत भारत अगर नहीं है तो आत्मनिर्भर भारत नहीं है. और आत्मनिर्भर भारत, उन्नत भारत बनाने के लिए तमाम जितने सारे रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको कहीं ना कहीं पे एक लीडरशिप की रोल लेने की आवश्यकता है. They need to assume the role of the leaders as such for making उन्नत भारत and आत्मनिर्भर भारत. कहने का मतलब ये है कि आप लोग अगर उन्नत है, आप लोग अगर आत्मनिर्भर है, तो समाज भी आत्मनिर्भर होगी, और समाज अगर आत्मनिर्भर है तो भारत भी अपने आप में उन्नत और आत्मनिर्भर हो जाएगा. और यही विजन है माननीय प्रधानमंत्री जी की. गति शक्ति योजना, फिर उसके साथ साथ भारतमाला योजना, फिर आपके जितने सारे समुंदर के आसपास जिस हिसाब से नींव रखी जा रही है, खास करके आपके by setting up of the like the deep sea lines for telecommunication as well as for internet services. This is something which was unthought of. This is something which was unrealized or unvisioned some 20 years back or 15 years back. Bharatmala ki जहाँ बात आती है, since I was one of the youngest experts in the Vajpayee government, I know that the late Prime Minister of our country, Shri Atal Bihari Vajpayee ji, had initiated the Bharatmala concept. और उसी पे उन्होंने तमाम जितने सारे प्रदेश हैं, सारे प्रदेश को एक दूसरे के साथ जोड़ने की एक, और वो भी आपके हाईवेज के माध्यम से, उनका वो विजन था. उसके साथ साथ एक शानदार और विजन उनका था इंटरलिंकिंग ऑफ द रिवर्स एज सच. पर दुर्भाग्यपूर्ण उसके बाद जिस तरह से सत्ता की चेंज हुई 2004 में, and then those things were all kept at the back burner for 10 long years. It is with the assumption of the Prime Ministership and the oath taking of the Prime Ministership by the Honorable Prime Minister of today, Shri Narendra Modi ji, in 2014, that all these initiatives were re-inculcated or rejuvenated as such. और जब rejuvenation करना होता है, विकास एक तरफा विकास नहीं हो सकता है. विकास की गति और विकास की दिशा सही दिशा में दिखाने के लिए, to make it a holistic kind of a development, जिसमें अंत्योदय का भी कॉन्सेप्ट हो और जिसमें अंतिम व्यक्ति का भी विकास हो, और उसके साथ साथ तमाम जितने सारे उद्योग घराने हैं उनका भी एक तरह से संयोजित प्रायोजित हो,
वे में छोटे घरेलू उद्योग के साथ एक संतुलित दिशा के साथ काम हो, उसके लिए all the pillars of democracy has to come together. Whether it is the industry, whether it's the academia, whether it's the bureaucracy, whether it's the ruling establishment or the political class in the ruling establishment, together with the media and the intelligentsia. जब तक ये चारों तरफ से इन सब चीजों का एक तरह से निर्माण नहीं होता है, ये ढांचा तैयार नहीं हो सकता है. इस बिल्डिंग को बनाने के लिए, इस ढांचा को तैयार करने के लिए हमें इस सारी चीजों की एक तरह से संतुलित वे में चीजों को लाने की आवश्यकता है. और मैं मानता हूं कि इस दिशा में IIT Roorkee can be one of the pioneering institute in this. Just two concluding remarks before I wind up. I believe, Professor Pant, as your colleague has already mentioned, that you all have signed in an agreement with the Jal Shakti Ministry as such, and whatever support and help is needed in relation to that from the Jal Shakti Ministry, I shall be very happy to help you all out in that. I also propose that I'm sure you all must be doing very good work in relation to nano bubble technology, like the way the other IITs are doing. We are signing agreements of understanding of our company with other IITs in relation to water purification, in relation to nanobubble technology, and also in relation to the MSME as such. So I think I would propose that we should go ahead with an MOU with your premier institution also in relation to this. MSME की एक बात हुई है, नौटियाल साहब, आपके उस पे मैं लाना चाहता हूँ. IIT Roorkee सहारनपुर कैंपस के साथ मार्च के महीने में हम लोग एक बड़ा सा राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं प्रोफेसर पंत के सहयोग के साथ in relation to emergence of MSME at the national level under G20. मेरा proposal रहेगा इस कॉन्फ्रेंस के बाद, probably in the month of September or October, about which I had discussed with you, that we should have a very big event here in IIT Roorkee itself in relation to G20 as such, because this whole year of India is in relation to G20, and I think milestone is too less a word for achievements for us in relation to 247 when we celebrate 100 years of Indian independence under the guidance of the Honorable Prime Minister. Thank you so much for inviting me here, and I think this is a beginning today. Thanks a lot. Bharat Mata ki jai. Vande Mataram.